Okay, so now we're going to discuss philosophy of Srimad Bhagavatam, and but how can I copy the link? Here we have this link for our broadcasting. So who is going to translate? Prabhuji, I will be doing the translation. You will be translating, right? Okay, Yes. very good. Very good. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we are going to discuss Srimad Bhagavatam, this verse 1.5.33, and basically we were planning to discuss from this verse till the verse number 40, means till the end of this chapter. But basically, because these purports to the verses are quite long, we will do a short analysis of this section, and we will read this verse. And if I suppose to give the class on the same topic tomorrow evening, if it is so, then we will read the purport for the next verse tomorrow's evening. ओके, तो प्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि आज हम श्रीमद् भागवतम से 1.5.33 श्लोक से कवर करेंगे और 1.5.40 तक हम आज कवर करेंगे। और ये जो पर्पट्स हैं काफी लॉन्ग है, काफी बड़े हैं, तो इसलिए हम उनका शॉर्ट एनालिसिस करने का प्रयास करें। Okay, so tomorrow's evening I should speak about the same topic, right? We continue the same topic, or what is about tomorrow? प्रभु जी, do you have lecture on tomorrow morning or evening? Tomorrow evening. So what is Okay. about tomorrow evening? Prabhuji, so tomorrow evening will be Bhagavatam class, Bhagavad Gita class. Bhagavad Gita class. Okay, then anyway, we're doing analysis, and then we read this verse 1533. Amayo yascha bhutanam jayate yena suvrata tad eva hyamayam dravyam napunati chikitsitam. O good soul, does not a thing applied therapeutically cure a disease which was caused by that very same thing? Haribol. Okay, Hare Krishna प्रभु जी। So translation में ये कहना चाह रहे हैं कि हे जीवात्मा, प्रभु जी, can you elaborate more about this translation? Do you have Bhagavatam in Hindi on your mobile? जी प्रभु जी, I have Bhagavatam. Then you just open and read from there. Okay. Just open 1533 and read the translation from your mobile. O good soul, does not a thing applied therapeutically cure a disease which was caused by that very same thing? Such question. So here we read how Narada Muni instructs Vyasadeva. Vyasadeva was not satisfied when he divided Vedas in 4 parts. He was not satisfied, so he asks Narada Muni why he is not satisfied, and Narada Muni gives an answer. So please read the translation. Okay, तो ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भैक्षज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ? Okay, very good. And in order to save time, you read the purport in Hindi. I'm not going to read it in English. We're going to save time. Okay. Okay, Prabhuji, so should I read in Hindi? In Hindi, from your mobile, the purport. तात्पर्य: कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी-कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं, तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के ताप त्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता।
ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता और तब अग्नि अपना कार्य करती। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तु का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग को सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने और अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक और न भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परम ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। इस प्रकार सर्व खल विदम ब्रह्म, यह वैदिक मंत्र चिरतार्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी योर वॉइस। Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yana Tasmaya Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manukishtam Stapitam Yena Bhutale Svarupa Kadama Yam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhya Eva Cha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, very nice example with milk products is given here. If one takes too much milk, he can have some troubles with his digestion, but the same problem can be cured if curd is given to the same person. तो इसमें बता रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जैसे जब हम दूध का पान करते हैं तो काफी सारी पेट में हो सकता है कुछ समस्या आ जाए, लेकिन उसका भी जो क्योर है, उसकी भी जो अगर हम ठीक कर सकते हैं तो उसको हम दही के रूप में जब हम उसी दूध को ग्रहण करेंगे तो उससे ठीक हो जाता है। So it is the question of usage. The question of usage. How do we use what we have? तो ये एक इस्तेमाल करने का नजरिया बताया गया कि हम उस चीज को किस तरह अपनाते हैं। So here it is written that we cannot solve problems of our existence just by mitigating our material activities. तो इधर बताया कि हम कैसे जो हमारी मेटेरियल एक्टिविटीज हैं उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं, उनका जो इफेक्ट है उसको हम हटा सकते हैं। Material activities in our position are unavoidable because we have this material body, gross material body, and subtle material body. So, anyway, because the soul is inside, these bodies will be active. तो हम क्या किसी भी तरह से उनको, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि जो आत्मा है उसके बाद उसके ऊपर सटल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी आती है, तो हम कभी भी उनके पूरे इफेक्ट को अच्छे से मिटिगेट नहीं कर पाते। So, it depends on what kind of activities we do using our material conditioning, and some of these activities can bound us in material world, and some of these activities can make us free from samsara. तो ये पूरा निर्भर करता है हमारे उन चीजों पे कि हम किस चीज को फॉलो करते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं, कि क्या एक्टिविटीज, क्योंकि ज्यादातर एक्टिविटीज हमको मटेरियल वर्ल्ड में बांधती हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि कैसी हम एक्टिविटीज करते हैं। So there is a quite famous saying that Srila Prabhupada uses in his classes and in his talks, conversations, and books that there is a bad bargain, and we can make the best use of it. तो एक उदाहरण है जो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में ज्यादातर यूज करते हैं कि एक बहुत बढ़िया जो इस्तेमाल है, मतलब किसी भी बेकार चीज का भी तो बहुत बढ़िया इस्तेमाल है
तो उसके बारे में बताएंगे। Where here in this material world, we have this material body, material mind, and of course, there are some discomfort that is created by Hare Krishna, who is there? There is some discomfort which is created by this material body, by this mind, by living entities who are around us because of our karma and so on. So basically, we can come to the conclusion that our material conditioning is the main cause of our discomfort in life. तो हम जैसे कि देखते हैं कि हमारी जिंदगी में हम काफी डिस्कम्फर्ट फील करने को मिलता है, अपने माइंड के थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू, जो डिसीज होती हैं उनके थ्रू। तो हम जानते हैं कि ये जो हम डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये हमारे शरीर के कारण ही हो रहा है, उन मेडिकल एक्टिविटीज की वजह से। And to some extent, it is true. And in Bhagavad Gita, in the 13th chapter, verses from 8 to uh, 12, the qualities of a knowledge are described, and one of the qualities of a knowledge is to understand or to realize that it is not good to remain in samsara, that when one takes birth or when one leaves his body, when one is old or when one is diseased, then it is trouble. It is trouble. तो भगवद गीता में 16 चैप्टर में 8 to 12 वर्सेस में बताया गया है कि कैसे ज्ञान के लेवल के बारे में बताया गया है कि कैसे जब भी हम बीमार से गुजर रहे होते हैं तो हमको अनुभव होता है उस पीड़ा का जो भी हमारे शरीर से हमको मिलती है। 13th chapter, ओके, 13th 13 chapter, चैप्टर। verses from 8 to 12. So it is the quality of a knowledge. It means that one who is knowledgeable, one who has this spiritual wisdom, he is not too much attracted by material life, material existence, because he knows about these aspects of material life that makes one's material existence actually miserable. तो जिनका जो आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान होते हैं तो वो इन सब के ऊपर ज्यादा अटैच नहीं होते, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कैसी बीमारी, कैसा पीड़ा उनको शरीर के द्वारा मिल रहा है। Because material world gives us some objects of enjoyment, but there is a price, and what kind of price one has to pay? The price is that one has to go through samsara, this Janma Mriti Jara Vyadhi, and also to deal with threefold miseries. तो ये जो भौतिक संसार है हमको थोड़े बहुत सुख देता है, लेकिन ये सुख भी हमको किसी मूल्य पे चुकाने पड़ते हैं, और वो जो मूल्य है वो हमको इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उसको भुगतना पड़ता है। But anyway, the materialistic approach to life is such that till I am in this material body and in this material world, let me squeeze any enjoyment, any pleasure which is available from this situation. तो इस भौतिक जगत में हमारा यही विचारधारा रहती है कि कैसे हम इस भौतिक जगत में से कुछ निचोड़ निकालें और अपने इंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें। So Vyasadeva is not satisfied when he divided Vedas in four parts and he is interested to know why am I not satisfied. Mhm. तो व्यासदेव जी भी इसी प्रकार जब उन्होंने वेदों का चार तरीके से अलग अलग भाग कर दिए, तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपने इस भाग से। तो वो जानना चाहते थे, उत्सुक थे कि वो इतने सेटिस्फाइड क्यों नहीं है इतने अच्छे वेदों के आकलन के बाद। And Narada Muni explains that the cause of this dissatisfaction, non-satisfaction, is that uh, he didn't glorify Supreme Personality of Godhead, but he just gave different aspects of Vedic culture, and people who are materialistically inclined, they will be just doing what they do. They will be having this materialistic way of life, but they will be just justifying their materialistic way of life by sacred scriptures. तो नारद मुनि ने उनको बताया कि जो आपने संकलन किया है वेदों का, उसमें आपने भगवान की ग्लोरीज के बारे में कुछ नहीं बताया। आपने बताया कि कैसे हम मेटलिस्टिक वे को फॉलो करते करते ही
हम वैदिक कल्चर को भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं. So it is the reason why Vyasadeva is not satisfied. Externally, it looks like he did a great job. He divided Vedas in four parts, but he is not satisfied because of this knowledge. People they will be able to justify his materialistic way, their materialistic way of life that actually gives ultimately gives no satisfaction to no one. तो यही उनकी असंतुष्टता का बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने उनके मेटलिस्टिक वे को ही ज्यादा प्रमोट किया और किसी को सेटिस्फेक्शन मिल जाए उस तरह से उन्होंने वेदों का संकलन नहीं किया. And the Supreme Personality of Godhead, who is situated in everyone's heart, also knows that in that way, humanity and different other living entities will not get this ultimate benefit just by reading different books about Vedic culture. So he also knows that it is not. He is also not satisfied. Supreme Lord in the heart of living entities, hearts of the living entities is not satisfied. It is one of the reasons why Vyasadeva also feels this lacking of satisfaction. तो जैसे कि हम सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो उनको भी पता चलता है कि हम संतुष्ट नहीं है उससे जो कि वेदों का संकलन व्यासदेव जी ने किया था. तो इसी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यासदेव जी को ये अनुभव हो पा रहा था कि जो मैंने वेदों का संकलन किया है वो उतना मुझे संतुष्टता प्रदान नहीं कर रहा. We do some activities in our life, and Supreme Lord always witnessing what we're doing. And sometimes when He is satisfied, then we also can feel ourselves happy. If He is not satisfied, then if then one can feel it. At least one can feel it in the form of voice of conscience. जैसे हम भी अपने जीवन में काफी सारे क्रियाएं करते हैं और हम भी कभी कभार संतुष्टता का अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि भगवान भी इस एक्टिविटी से संतुष्ट हैं. लेकिन कभी कभार हमको भी लगता है कि हम असंतुष्ट हैं, हमने जो कार्य किया है वो ठीक नहीं किया, तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान भी उस कार्य से असंतुष्ट. So the approach which is typical for Mayavadis, for impersonalists, is that if this material world, material energy, material body, material conditioning, if it gives me trouble, let me reject it. तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए कि क्योंकि ये हमको कष्ट ही दे रहा है, जितनी भी हमारे भौतिक क्रियाएं हैं, भौतिक शरीर है, तो हमको इसको रिजेक्ट करना चाहिए. But Vaishnavas, they don't do like this. They make the best use of bad bargain. लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो ये सब नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते, वो इसका भी बेस्ट यूज करते. It means that there are some positive aspects of the situation, and one can take advantage from these positive aspects of his situation, being conditioned in this material world. But for that, one has to get some knowledge how to get this benefit from these positive aspects. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी भी एक पॉजिटिव साइड है, इस भौतिक जगत की भी एक पॉजिटिव साइड है, इसका इस्तेमाल वैष्णव जन कर, लेकिन उसको भी एक अर्जित करने के लिए हमको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए जो कि हमको स्क्रिप्चर से मिलता है और वैष्णव से मिलता है. And it is called Yukta-vairagya or genuine renunciation, proper renunciation. तो इसको भी प्रॉपर रिनाउंसिएशन युक्त वैराग्य कहा जाता है. So this mood is described, for example, in this quite famous verse. Not this verse or not this verse. Okay, let's check. I wanted to show you another verse. Well, both of them, both of them. This one. Яд хороший дашнаси, яд жухоши дадаси яд, яд тапаси сикаунты яд откую швамадарпанам. Bhagavad Gita 9:27. If you have this in Hindi in your mobile, you please open and read the translation. And the translation goes like, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me.
तो इस ट्रांसलेशन में प्रभुपाद इस ट्रांसलेशन में भगवान कह जा रहे हैं कि जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम ऑफर करते हो, और जो भी तुम अपनी तपस्या करते हो, तुम उसको एज ए ऑफरिंग मुझको अर्पण करो। Just do everything for Krishna, and in that way you can make best use from this bad bargain. तो जितनी भी चीजें हैं हमको भगवान कृष्ण के लिए करनी चाहिए। तो अगर हम भगवान कृष्ण के लिए करेंगे तो हम बेस्ट यूज करेंगे उस रिजेक्शन वाली चीज। Mm. And what will happen, it is written in the next verse, Shubha Shubha Bhalai Revam Mokshya Seya Karma Bandhaneich Sanyas Yoga Yuktatma Vimukto Mam Upayasya Si. In this way you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in the principle of renunciation, you will be liberated and come to me. तो इस प्रकार इधर बताया गया है, इस प्रकार जब हम कार्य करेंगे तो हम कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, और क्या शुभ है क्या अशुभ है इसमें भी हम नहीं फंसेंगे। हम अगर अपना जो मन है वो भगवान में फिक्स रखेंगे तो ये एक प्रॉपर रिनंसिएशन कहलाएगा, और हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। So basically, it is about the consciousness that I see something nearby myself. I see some material resources that I can use. And then the question raises how I'm going to use it. Am I going to use it for myself? Or I just should remind myself that it belongs to Krishna and it should be used in service for him? That is the question. तो जब भी हम अपने आसपास, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि हम अपने आसपास चीजें देखते हैं, तो हम इसको कनेक्ट करना चाहिए किस प्रकार हम इसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या किस प्रकार ये भगवान की सेवा में हम यूज कर सकते And of course, in that sense, the devotees association is very important because devotees they always remind us of Krishna, that everything belongs to Krishna, that we should serve Krishna. हैं। तो डिवोटीज का भी कुछ मनोभाव इसी प्रकार होता है कि किस तरह वो इस चीज को भी भगवान की सेवा में लगा पाए, उस चीज को भी भगवान की सेवा में लगा पाए, और हर चीज भगवान से कनेक्ट कर पाए। So it is actually it is also a question of creativity, creativity, creative approach. I see something before myself. I see these material resources, or there are some internal resources, my resources like my abilities or intelligence or whatever. And the creativity is to find a way how I can engage it in devotional service for Krishna nicely in order to satisfy him. तो इसको एक तरह से क्रिएटिव अप्रोच के रूप में देखा जा सकता है कि कैसे हम क्रिएटिव में अपनी जो भी हमारे पास सूक्ष्म चीजें हैं और जो स्थूल चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तो इसको काफी क्रिएटिव वे में हम आइडेंटिफाई कर सकते Of course, if to speak about how to engage what we have in devotional service, the first step is to ask spiritual master. The first step is to ask spiritual master, what should I do? Please instruct me. What should I do for Krishna? हैं। तो जो पहला स्टेप होता है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का, तो वो हमें हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हमको अपने आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर से पूछना चाहिए कि हम हमें क्या करना चाहिए। Otherwise, we can speculate and speculate. We can invent different ways how to serve Krishna, and it is not guaranteed that these ways will be authoritative. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सिर्फ चिंतन और चिंतन करते रह जाएंगे, और हम ये सोचते रह जाएंगे कि हम कैसे भगवान को यूज करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। His Holiness Bhakti Ratnakar Ambarish Maharaj, maybe you know him, likely you know him. He met once two um, two persons on the street who previously were devotees, but after some time, because of some reason, internal reasons, they left our society. ओके, तो हिज होलीनेस भक्ति रत्नाकर स्वामी महाराज बताते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं कैसे उनके आसपास की स्ट्रीट में कुछ भक्त थे जिन्होंने कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से छोड़ दी थी। So these two people were smoking cigarettes, and they told Maharaj, actually we are devotees because every time when we get our salary, we offer our money to Krishna, and then we buy these cigarettes and enjoy.
तो वो कहते थे कि अब वो ज्यादा सिगरेट स्मोक करते थे और वो महाराज जी को कहते थे कि हम डिवोटी हुआ करते थे और जो भी हम धन भगवान की सेवा में लगाते थे उससे जो थोड़ा बहुत धन था उससे हम सिगरेट लिया करते थे। It depends on creativity on one's mind. If mind is creative but at the same time too much conditioned, then we can have cases like this. तो ये एक क्रिएटिविटी का एक पक्ष है, ये भी एक क्रिएटिविटी का पक्ष है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम ज्यादा इस तरह में जाएंगे तो कुछ ऐसे रिजल्ट हमको मिल सकते। So the idea is, first of all, we ask spiritual master, we ask senior devotees what to do, but then the creativity also can take place. We can find in one of the purports to the fourth canto of Bhagavatam, it is mentioned that not only one should follow spiritual master's instructions, but one should also meditate and think how I can perform this, how I can execute these orders, spiritual master's orders, in the best way. तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में बताया गया है कि यही सबसे पहले तो हमें स्पिरिचुअल मास्टर से पूछना है कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमको ये भी देखना है कि जो उन्होंने आदेश दिया है उसको किस प्रकार से करना है, उसमें भी हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। It means that better to have conscious a conscious approach to these instructions that we get from spiritual master than to have some formal, you understand what I'm speaking about, right? Formal approach that it was told to me that I have to do it, okay, I will do it. I don't put my consciousness here, I just do it because it was told to me to do. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस का प्रयोग करना चाहिए, ना कि काफी फॉर्मल हो जाना चाहिए कि हाँ हमें बोला गया है तो हमको करना है। हमको अपनी कॉन्शियस डालनी है, अपने भाव डालने हैं उस सेवा में जो हमको स्पिरिचुअल मास्टर ने आदेश दिए। So when one tries to understand, or when one meditates how to follow spiritual master's instructions in the best way, it is also one of the aspects of Yukta-vairagya. It means one has this intelligence, which is also like his personal internal resource, and this resource is used in Krishna consciousness. तो यही एक पक्ष देखा जाता है युक्त वैराग्य का। तो हम देखते हैं कि जिनके पास जो वैराग्यवान होते हैं तो वो कैसे जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज उनके आसपास के, उसको भगवान की सेवा में लगा। So here we have this definition of Yukta-vairagya, Anasaktasya Vishayan, Yadhartham Upayunjatah, Nirbandhah Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchate. It is from Bhakti Rasamrita Sindhu 1 to 255. तो ये जो इधर एक एक्सप्लेनेशन दी जा रही है इस श्लोक में जो कि भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। Okay, so but the translation is given in another purport. Let me find where it is. I prepared few purports for you. Dear devotees, Hare Krishna. Okay, let's read the translation from here. It is purport to the verse 4:29:55. When one is not attached to anything, but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. तो इसमें इस पर्पट में बताना चाह रहे हैं कि जब कोई हम किसी चीज से आसक्त नहीं होता और सेम टाइम पे उसी समय पे वो वो सब चीजें एक्सेप्ट करता है, सब चीजें स्वीकार करते हैं जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, तो हम वो जो जितनी मेटेरियल पोजेसिवनेस होती है कि हमको ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो इससे वो ऊपर चला जाता है। So, what does it mean? Accepts everything in relation to Krishna. It means he thinks how I can engage it in relation to service to Krishna. तो जैसा कि इधर दे रखा है accepts everything in relation to कृष्ण, इसका मतलब ये है कि हम कैसे जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको भगवान कृष्ण से रिलेट करते हैं। The idea is to become situated above possessiveness. It means that we don't consider that it belongs to me. Means my resources or my abilities, talents, or even my relatives, and even myself. Even myself, nothing belongs to me. Everything belongs to Krishna.
तो इसमें राइटली सिचुएटेड अबाउ पॉजेसिवनेस का अर्थ है कि हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे को बिलोंग करता है, ये रिलेटिव्स मेरे हैं, मैं खुद हूँ, मैं भगवान का नहीं हूँ। ये पोजेसिवनेस से हमसे छुटकारा मिलता है। Everything belongs to Krishna. He is the supreme owner of everything, and it means if everything belongs to him, it means that everything should be used according to his interests. तो अगर हमें पोजेसिवनेस से जब हम बाहर चले जाएंगे तो इसका मतलब हमको पता चलेगा कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो भगवान कृष्ण से ही रिलेटेड है, हमें उनकी सेवा में ही उनको लगना है। And someone can say that, oh, it is very difficult to practice this approach, to think like this. और कभी कभार कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए कि इस तरह से हम अपना रुझान रखें। So, and what we can answer on this? Well, if we are speaking about discipleship, if we are speaking about acceptance of the spiritual master, it is one of the things that we actually learn from him. Because if we speak about a spiritual master, disciple, and so on, then the question raises what actually we learn, what actually we study. So it is one of the things that we study, how to do it, how to become situated above possessiveness in order to satisfy Krishna. तो इसका हम जवाब किस प्रकार दे सकते हैं? इसका जवाब हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि जैसे एक डिसाइपल होता है जो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है, तो उनके जब ऑर्डर्स को जब एक्सेप्ट करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम ये जो ऑर्डर्स मिला है किस में हम उसकी अपनी चेतना उसमें लगा सकते हैं, किस तरह हम उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। It is the question of developing particular attitude which is beneficial to spiritual life. It is not that we have to become beggars. It is not that we are going not to possess anything. It is just the question of the attitude and the question of a practice that we can engage different things that we have in service to Krishna. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भिखारी बन जाएं और भीख मांगे। इसका मतलब हम हमें खुद जानना पड़ेगा कि किस प्रकार हम बाकी चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चीजें छोड़ दें, रिजेक्ट कर दें। And when it is written, one is not attached to anything, one of the aspects here in the definition of Yukta-vairagya, one is not attached to anything, it doesn't mean that he doesn't care of anything. It doesn't mean that he is neglectful to his possessions. If he understands that it belongs to Krishna, then of course he or she takes care of these possessions. uh, that is not attached to anything. It means that he or she doesn't consider these possessions to be the source of his or her happiness. तो कोई कि बिना किसी चीज से आसक्त होने का मतलब ये ये भी है कि हम जो भी पोजेसिवनेस है हमारी, हम उसको निग्लेक्ट नहीं करते, हम उसको एज ए रिलेशन ऑफ कृष्णा देखते हैं कि वो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, तो हमें इनको एक्सेप्ट करना है, इनकी सेवा करनी है, इनका ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम उनके प्रति नेग्लेक्टफुल नहीं होते, हमको एक्सेप्ट करते। So it means Yukta-vairagya mood. It means that one is much more happier when he finds a way to engage what he has in devotional service, and it makes him much more happier than his attempts to satisfy his senses with different objects of this material world, just without idea to satisfy Krishna. तो ये जो युक्त वैराग का जो स्टेज है वो हमें काफी खुशी और काफी संतुष्टता प्रदान करता है, क्योंकि हमारे पास जो भी हम भौतिक ऑपुलेंस है, मतलब जो भी भौतिक चीजें हैं उसको हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं और उसे हम अपना नहीं समझते, तो इससे हमें संतुष्टता प्रदान होती है कि भगवान कृष्ण हमसे संतुष्ट हो रहे हैं। Of course, it is broad topic. We cannot cover this topic of Yukta Vairagya during this short class, but anyway, we will try to say something. तो ये जो युक्त वैराग का जो टॉपिक है ये काफी बड़ा है, काफी डिटेल में इसमें बोला जा सकता है, लेकिन इस क्लास के शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से हम ज्यादा कवर नहीं कर पाते। Anyway, it is written here he is not attached to anything. And one of the aspects that he is not attached to anything is that he is not inclined or she is not inclined to make his
life in this material lifestyle in this material world more luxurious and complicated. तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वो जो भक्त हैं, जो भी पर्सन है जो अटैच नहीं है, वो अपनी जो लाइफ है उसको ज्यादा लग्जरियस नहीं बनाना चाहते, ज्यादा खुशहाल नहीं बनाना चाहते, वो बस भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहते। It means that he has or she has some bodily needs, and he or she they just satisfy these needs exactly according to uh, how much it is needed, but not more. तो ये एक बॉडी का भी प्रश्न आता है कि जो युक्त वैराग्य स्टेज पर जो उनकी बॉडी की नीड्स भी होती हैं, लेकिन वो उसको ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करते, जितना आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार ही वो उतना ही उसको ग्रहण करते। So we have this lecture that was given in Delhi. Where in Delhi? It was also given in Delhi. It was given in 1973, and now is 2023. It means how many years ago? 50? 50 years ago or 40? 50। 50. Okay, in November the 6th. So Srila Prabhupada gives class on Bhagavatam 213. So he explains. I will read this part and you will translate in Hindi. So Srila Prabhupada, he gives the class, he explains. Sleeping required, but not for attachment. Somebody is living for sleeping, and somebody is sleeping just to give rest to the body. Similarly, eating also. Eating is not prohibited. You have to eat because you have got this body, but not that simply for eating I am living. This is called Yukta-vairagya. Don't be attached to the Vishaya, eating, sleeping, mating, that I have to eat so much, I have to satisfy my palate, I have to eat this thing in the restaurant. No, you eat simply just to keep your body fit, not extra. Don't eat more than it is required for maintaining your body. Similarly, don't sleep more as much as you require for maintaining your body. And so on and so on. So this part you please translate this one. तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सोने की हमको जरूरत है, बट हमको उससे अटैच नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सोते हैं सोने के लिए, लेकिन कुछ लोग सोते हैं अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, विश्राम देने के लिए। सिमिलरली हम खाने के तौर पे भी हम देख सकते हैं, खाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन हमें उतना ही खाना है जितना हमारी बॉडी को जरूरत है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते, तो इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, कि हमको खाने के लिए नहीं जीते। और इसमें बता रहे हैं कि हमको विषयों से अटैच नहीं होना, जो कि है खाना खाना, सोना, मैथुन करना। हमें ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए अपनी स्टमक को भरने के लिए, अपनी पैलेट को भरने के लिए, हम कि इस रेस्टोरेंट में हमको ये खाना है। तो ये भी हमारी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। हमको बस यही सोचना चाहिए कैसे हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें और भगवान की सेवा में उसको लगाओ। And again, how it is related with Krishna, the question raises because some people they have simple lifestyle because of some reason. Some people are just inclined to have simple lifestyle. Some people cannot have much things in their lives because of they are poverty stricken or something else. So how to what is the relation of this simple lifestyle with Krishna? The question raises. तो ऐसा हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सिंपल लाइफ एक तो युक्त वैराग्य वाले भक्तों की होगी, और एक सिंपल लाइफ होगी उन गरीब लोगों की जो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक तरह से सिंपल लिविंग का इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये एक प्रश्न उठ सकता है। And the answer is that Srila Prabhupada gave slogan not just simple living, he gave slogan simple living and higher thinking. तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि प्रभुपाद ने सिर्फ सिंपल लिविंग नहीं बोला, प्रभुपाद ने कहा है सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, मतलब हमको असादा जीवन, उच्च विचार। And higher thinking in this situation means I have to keep my body fit and I have to sleep enough and so on and so on to maintain myself. But why should I maintain myself? I should maintain myself in order to be able to be capable to serve Krishna. तो ऐसा हमको विचार रखनी चाहिए कि जो हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, उतना ही खाएं,
जितना की आवश्यकता है उतना ही सोएं, जितना कि हमारी बॉडी को रेस्ट मिल पाए, ताकि हम भगवान की सेवा में और बेहतर तरीके से हम इंडल्ज हो। I have this material body, and this material body is my instrument to serve Krishna. So I should keep my body, my instrument fit in order to live longer and to serve more. तो हमारी ये विचारधारा होनी चाहिए कि ये हमारी जो बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम भगवान की सेवा में हम उपयोग करेंगे। हमको अच्छा खाना है, अच्छी तरह सोना है, ताकि हम ज्यादा जिए, लेकिन भगवान की सेवा की। And materialistic people, what do? They consider this body as an object of their enjoyment. Means it is instrument for me to interact with material world and to get some pleasure from different interactions. तो जो मेटलिस्टिक लोग होते हैं उन वो कुछ ऐसा सोचते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा भोग करना है, ताकि हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करें। I interact with nature, I interact with food, I interact with bodies of other living entities, and it is all my ways how can I get some happiness, so-called happiness in this life. तो वो नेचर से कनेक्ट होते हैं, वो बाकी लोगों से कनेक्ट होते हैं, कि वो बस चाहते हैं किस तरह हम आनंद भोग कर पाए अपने इस जीवन का। But because one cannot get much happiness from dull matter, what materialistic people they have to do in order to anyway to when they search for happiness in this world, what do they have to do? They have to increase their bodily needs, to increase their materialistic standards of life, but anyway ultimately anyway they are not satisfied. तो वो बस प्रयास करते हैं किस तरह वो ज्यादा से ज्यादा बटोर पाए खुशियां, लेकिन इन जड़ चीजों से खुशियां बटोरना काफी मुश्किल है, और वो अपने लाख प्रयास करने के बाद भी वो असंतुष्ट ही अनुभव करते हैं। One can become satisfied if he practices Yukta-vairagya, if he uses what he has, his body, his intelligence, his words, his money, in Krishna's service. जब हम युक्त वैराग्य स्टेज पर आएंगे, तभी हमको वास्तविक संतुष्टता का अनुभव हो सकता है, क्योंकि तब हम अपने शरीर, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समस्त चीजों को भगवान की सेवा में लगा पाए। And Srila Prabhupada gives a very nice and quite well-known example with a tree and root. When we put when we pour water on the root of the tree, and the root of the tree means root of the existence, of the whole existence is Krishna. When we feed this root, then the whole tree is gets nourishment. The branches, the leaves gets nourishment. It means that when we serve Krishna, then everyone is satisfied. At least we are satisfied. That is for sure. तो जैसे कि प्रभुपाद जी भी काफी एग्जाम्पल्स में ये प्रयोग करते हैं कि एक पेड़ है, उसकी जड़ है, और वो पेड़ खुद है, उसमें पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं। तो जब हम उसकी जड़ में पानी डालेंगे, यानी जब हम कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लीव्स में, फ्लावर्स में, और जो फ्रूट्स हैं वो सब नरिश होंगे। तो ऐसे ही हम सब भी, सभी जीवात्मा उनसे प्रसन्न होगी अगर भगवान ही संतुष्ट हो। It is about principle of Yukta-vairagya. So when one is devoted to Krishna, and the more one is devoted to Krishna, then his natural question or his natural intention, which is perpetual in his life, is that when he sees some opportunities of something, he or she thinks, how I can relate it with Krishna, how I can satisfy Krishna by such resource or this opportunity, and so on and so on. तो इस स्टेज पे जो होते हैं वो यही प्रयास करते हैं, यही सोचने का कि जो भी उनके पास अभी वो कर रहे हैं, उनके पास जो चीजें अवेलेबल हैं, जो उनके आसपास चीजें हैं, वो किस तरह भगवान की सेवा में लगा पाए। वो यही प्रश्न पूछते हैं कि ये भगवान की सेवा में किस प्रकार प्रयोग हो सकता है। Srila Prabhupada was in this mood, Bhaktisiddhanta Saraswati was in this mood. We can read Srila Prabhupada Lilamrita, and we can see many stories where it is described how Srila Prabhupada was in this mood, that there is a mission to propagate Krishna consciousness,
And so we built this temple, that temple, we print this book, that book. So he is always absorbed in this process of thinking, of meditating, how to do it and how to do it in the better way. तो हम प्रभुपाद जी की लाइफ से भी, प्रभुपाद लीलामृत से भी हम काफी सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि प्रभुपाद जी भी इसी मूड में रहा करते थे कि प्रभुपाद जी ये मंदिर बनाना है, वो मंदिर बनाना है, कि उधर भी मंदिर बनाना है, और अभी बुक की ट्रांसलेशन करनी है, इतनी बुक की ट्रांसलेशन करनी है। तो इन्हीं सेवाओं में प्रभुपाद जी लगे रहते थे पूरा दिन कि किस तरह हम चीजों को भगवान की सेवा में ला सकते। Or, for example, Bhaktisiddhanta Saraswati, his mood of Yukta-vairagya was such that he installed this printing press in the temple room, and he was calling this printing press to be Brihat Maridanga, to be the instrument in the service of Krishna, which helps to propagate Krishna consciousness very wide, very broadly, very widely for many people, just by publishing this Harmonist magazine and different books. तो जैसे कि हम देखते हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भी जो प्रिंटिंग प्रेस का उन्होंने दौर शुरू किया था, उसमें उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट डाला था। तो उसमें हम देखते हैं कि उसको हम वो बृहद मृदंगा बोलते थे कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम भगवान की सेवा में उसको लगा रहे हैं। तो वो भी एक प्रेस का नाम था जो उन्होंने शेयर किया था ताकि बहुत लोगों तक वो स्पिरिचुअल मैसेज ट्रांसफर हो। So for some people, printing press is just printing press, but devotee he sees Krishna everywhere. तो सबके लिए, ज्यादातर लोगों के लिए वो प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस होता है, लेकिन डिवोटीज हैं उनके लिए जो प्रिंटिंग प्रेस है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि भगवान की सेवा में वो लगा सकते It is put mood of Yukta-vairagya, and we try to learn this mood, to imbibe this mood from spiritual master, from Srila Prabhupada, by observing their activities, by taking their instructions, and by following their instructions. हैं। तो यही एक युक्त वैराग्य का जो स्टेज है जो हम ले सकते हैं प्रभुपाद जी से, और हमारे समझ जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे जब हम उनकी एक्टिविटीज को एनालाइज करेंगे तो उनसे हम सीख सकते हैं कैसे हम स्टेज तक पहुंच पाए। Hare Krishna. Thank you very much for your attention. If you have some questions, if we have time for these questions, then let's do it. Let's discuss. तो आप में से किसी भी ड्यूटी का कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं प्रभु जी से, तो हम उसका आंसर देंगे। ओके, अमित प्रभु जी। Okay, Amit Kumar Mahasetх. Okay, please. Hare Hare Krishna, Prabhuji, Krishna. Dharma Prana. Hare Krishna. Prabhuji, we have heard many times about this Yukta-vairagya, but I Mhm. don't remember any time when I have understood this much about Yukta-vairagya. So I Okay, just thank you, Prabhuji. Thank you very much. I don't have any question, but okay. I have realized today in today's class, I have realized what is Yukta-vairagya actually. So thank Oh, you very much, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Amit Kumar Mahasetх. Thank you for your words of appreciation. Okay, some questions. Do we have some questions? Some thoughts? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Sarvatranam. Okay. I have a question. Thank you so much for this wonderful lecture. And in fact, I was also having a little confusion with regard to Yukta Vairagya, but in a very subtle manner, in a nice manner, you as well as Gauranga Prabhuji has explained it so well. So that way, we have to understand that how Yukta Vairagya can actually lead us to Bhakti Bhavana. My question over here, Prabhuji, is that in materialistic life, we have engrossed ourselves so much. And though we are hearing all these things, we are listening to all these lectures, and there's a moment where we are inspired, but at times when we are into the world of this materialistic, and we just tend to forget sometimes. So
how is that constantly we have to follow whatever was told today? How is that possible, Prabhuji? And how can we also follow you and other Prabhujis who are present over here and come to that level so that our bhakti can be increased, Prabhuji? Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Gaurang, are you going to translate it in Hindi? Is it needed or not? Prabhuji, I don't think that it will be needed. It is not needed. Okay. Well, Srila Prabhupada was saying that in Kali Yuga, we live in Kali Yuga. In Kali Yuga, to memorize something means to write it down. We have no memory. We almost have no memory. We have some memory, but then we have some impressions. Then time goes, we get new impressions in our life, and these old impressions are replaced with new impressions, and goes like this. The flow of time goes, so we can write down different realizations that we get more over in one class, or later. Seems to be it was class. On one class, Srila Prabhupada, he gave an instruction that every day you have to write something down. You have to write your realization. And then we can use our notes, and coming back to this experience that we have got 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago, and moreover, it is a nice practice in the sense that when you read your diaries, you see that actually spiritual growth actually takes place, that our consciousness changes. Gaurang Prabhu, is there need to translate it or not? What do you think? So Prabhuji, I will translate it. So, Okay. तो प्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि प्रभुपाद जी भी कहते थे कि हमें जो अपनी रियलाइजेशंस है वो एक पेज पर लिखनी चाहिए. डे टू डे हमारे जो रियलाइजेशंस है वो अगर हम पेज पर उतारेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ ट्रांजिशन हो रहा है हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में. तो हम देखेंगे कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है. तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, हम जो डेली कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम जो भी चीज स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हम पे पड़ रहा है. And also in one Upanishad, it is described that our process, how do we perceive and imbibe spiritual knowledge, it goes through 3 stages, and these stages are called Shravanam, Mananam, and Nididhyasanam. Gaurang? ओके प्रभु जी. तो शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि हम जो भी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से निकलते हैं तो वो 3 स्टेजेस से होता है. श्रवणम, मननम, एंड प्रभु जी व्हाट वाज द थर्ड वन? Nididhyasanam. प्रभु जी, कैन यू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश? It is. I will translate in English, of course. Nididhyasanam. Okay, you can read this word from chat. This Sanskrit word. निधिध्यासनम. Can it be self-practice? Excuse me? Can it be self-practice? I didn't understand what you are saying again. Speak to the mic. Is it self-practice? I'm going to explain. So first, Shravanam. Shravanam means that we hear the spiritual message. Then Mananam is important. Means we should contemplate about this. We should think about this. How we're going to implement, to use this knowledge in practice. It is the second stage. Gaurang, are you going to translate me or not? जी प्रभु जी. Okay. तो इसको सेल्फ प्रैक्टिस कहते हैं कि निज अभ्यासनम को. और ये तरह के 3 स्टेजेस हैं जो प्रभु जी ने बताए थे. श्रवणम, मननम और निज अभ्यासनम. No, not Nich Abhyasanam. Nididhyasanam, exactly. Nidid Abhyasa. No, not Abhyasa. Abhyasa, it is not about Abhyasa. Nididhyasanam. Nididhyasanam. Just repeat like it is. I'm not a Sanskrit scholar. I don't know how it is, how to translate it. But the idea is that on the third stage, which is called Nididhyasanam,
it means that this knowledge becomes your alter ego, becomes your nature. It means that previously you were just about learning this knowledge, and now you just perceive world, perceive the reality which is around you through the eyes of this knowledge. Nididhyasana. It is the level of consciousness when consciousness is transformed with this knowledge. तो ये जो निधि ध्यासनम का स्टेज है, इसमें हमारी नॉलेज है जो हम शास्त्रों से या फिर इधर उधर जगह से हम जो बढ़ाते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उससे फिर हम देख पाते हैं हमारी जो मेटेरियल, हमारा जो विजन होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं कि किस तरह का ये हमारे आसपास चीजें हो रही. But it is really important. We're still answering on the Rekha Mataji's question. It is very important to go through mananam process, which is in between, because if there is no mananam, if there is no process of thinking how I'm going to use this knowledge in my life, then we cannot expect nididhyasanam. We cannot expect that this knowledge will transform us. तो ये जो हम प्रभु जी बता रहे हैं कि हमारा जो मेन स्टेज है, हमको मननम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम ज्यादा मनन नहीं करेंगे कि हमको किस तरह से उस चीज को करना चाहिए, तो निधि ध्यासनम के स्टेज तक हम नहीं पहुंच पाएंगे. जो नॉलेज है हम उसको अपने विजन में नहीं ला पाएंगे. And nididhyasanam is very desirable because all of us, we want these spiritual realizations, we want our consciousness to be uplifted. तो निधि ध्यासनम का जो स्टेज है वो एक तरह से बताते हैं कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो कितना अपग्रेड हुआ. And so, in order to practice mananam, again, we have to write it down. We have to write it down. We have to make notes. Otherwise, it will be quite difficult to practice mananam because, like Mataji, you are completely, absolutely right, 100% right that we have these problems with our memory. We hardly memorize anything. So we write something down. Moreover, it is Srila Prabhupada's instruction to write down these things, this what we read interesting in Srila Prabhupada's books. But then the second stage is mananam, means I have to think how to use it. Not just I'm impressed or I'm excited by hearing something transcendental, but also we should think how we are going to use it. तो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि हमको लिखना चाहिए, तो हमको इसको अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि हमारी मेमोरी की, हम जानते हैं हमारी सभी की मेमोरी की काफी दिक्कत है, तो हमको लिख लिख के प्रयास करना चाहिए ताकि हम जान पाए कि हमारी कहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. और जितना हम मननम करेंगे कि जो भी हम सुनते हैं उसको हमें ध्यान रखना है कि उसको हम सेवा में कैसे लगा सकते हैं, ये प्रश्न भी हमको खुद से पूछना चाहिए. And also this process of mananam we can practice not only alone, we can practice with devotees. It means, for example, there is a group of devotees who discuss Bhagavatam or Bhagavad Gita, and they share their opinions how we can what can be our practical approach to what we've read in the books. तो हमें इस तरह के ग्रुप से भी जुड़ना चाहिए. हम ढूंढना चाहिए इस ग्रुप को जो श्रीमद् भागवता के श्लोकों पे मनन करते हैं, जो चिंतन करते हैं कि हाँ हमने ये आज पढ़ा है, तो हम किस प्रकार से इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो. And also we can take help from our seniors because they have experience, understanding of how this knowledge is implemented in our life. So we can ask their opinion. Also, we can ask them, and it also included in manana process. It is not that we only ourselves do it, because if we do it ourselves, means in uh, in uh, in many cases it means that we just deal with our conditioned mind, and this conditioned mind can give us some solutions, but not so many solutions that we can get if we associate with devotees, if we discuss it with devotees. जी, तो हमको किसी के गाइडेंस में ही इन सबको, ये जो मननम है स्टेज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है हम अपने मन से ही डील कर रहे होते हैं और हमारा मन ही हम कुछ सॉल्यूशन देता है जो कि मेटेरियलिस्टिक सॉल्यूशन होते हैं,
और जो कि स्पिरिचुअल किसी भी तरीके से नहीं होते। तुमको ध्यान रखना है, हमको भक्तों के संग में ही इस प्रोसेस को फॉलो करना। Okay, does it answer on your question? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji Rekha. So Mataji Deepika, please. हरे कृष्णा प्रभु जी, Hare धन्यवाद, प्रणाम। Krishna. थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न ये था कि जैसे आपने युक्त वैराग्य के बारे में बताया, तो हमें पता है कि युक्त वैराग्य क्या है, हम शास्त्रों से पढ़ते भी है, सुनते भी है। तो हमें कुछ भी जो चीजें होती है आसपास की, हम भगवान की सेवा में इसका प्रयोग करना चाहिए, वो युक्त वैराग्य है। लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारे अंदर फिर भी ना वो भगवान की सेवा में लगाने की बजाय अपनी सेवा में लगाने का मन फिर मन में आता ही है। तो इस चीज को हम कैसे उसको अच्छे से पूरी दृढ़ता पूर्वक कर पाए कि हम भगवान की सेवा में उसको अच्छे से लगाएं, अपने मन में विचार भी ना आए कि हम उसको अपनी सेवा में लगाएं। एक्चुअली हम भगवान का भोगा भी बनाते हैं, तो उसको भगवान के, हमें पता है भगवान के लिए बना रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि मन में विचार ही आता है कि हमने खाना है वो। तो ये सब चीजें हैं, तो हम बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होता है हमें। तो हम चाहते हैं भगवान की सेवा में लगाए, पर हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप थोड़ा गाइड करें और अपना ब्लेसिंग दीजिए प्रभु जी। यही थी। Okay, so what is the question? Okay, so Prabhuji, the question is that you have told us about Yukta-vairagya, and we also heard from various places and read from various places about Yukta-vairagya. But what happens is that we try to do something for Krishna, but a thought came to our mind that we also have to enjoy that. But so Mataji took an example of bhog preparation. So when we prepare bhog for a lot, then the second desire which came to our mind is that we also have to enjoy that offering which we have offered to Krishna. So how can we just remove our own thought, our own thought of sense gratification from that? Well, in this particular case, one can remove these thoughts just by taking some food stuff before going on the kitchen and cooking for deities. It means it is quite difficult not to think about food when you cook, even for deities, but at the same time you are hungry. It is quite difficult. So it is much more better not to go on the kitchen when you are hungry. First take something and then happily cook for deities. तो प्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि काफी डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि हम रसोई में जाएं, भूख के लिए प्रिपेयर करें और हमको हमारी इच्छा ना जागे। तो प्रभु जी कहना चाह रहे हैं, तो इसका एक हम ट्रिक ये भी यूज कर सकते हैं कि हम थोड़ा प्रसाद पाके जाएं ताकि हमको भूख ना लगे, और क्योंकि हमको भूख नहीं लगेगी तो हमारे अंदर वो भावना नहीं आएगी सेंस ग्रेटिफिकेशन। The same recommendation is given to those who serve prasadam, to those who distribute prasadam. First, for example, on Sunday feast program, first they have to take prasadam in order to be satisfied. Otherwise, because it is important for those who serve prasadam, it is important to be in peaceful, to have peaceful mind. Because when they serve prasadam, when they distribute not only prasadam, they distribute their consciousness. So it is much more better if they are satisfied. So it is nice when they already ate something good. तो ऐसा हम एग्जांपल देख सकते हैं जब प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होता है। तो जब प्रसादम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उनकी चेतना ही वो जो पाने वाले हैं उनके अंदर डालते हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि वो जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उनकी भी चेतना संतुष्ट होनी चाहिए, उनकी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं भी इसको बाद में पाऊं, वरना वो भी उनकी कॉन्शियसनेस में जाए। इसलिए उनका भी कुछ मनोभाव इस प्रकार होना चाहिए कि हाँ, ये मैं उनकी सेवा के लिए कर रहा हूँ और मैं इनको ये परोसता हूं। And of course, they should not overeat. Even in Srila Prabhupada's times, there were cases when people who were supposed to serve prasadam, devotees, they were overeating so much that they actually hardly can move. But they were expected to serve prasadam, so it was torture for them. It was very difficult for them to distribute prasadam. So it means again we are not about to overeat, just to take so much that body is functioning properly and mind is satisfied. That's all. तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उतना भी ना पाए कि हम बाद में अपने शरीर को हिला ना पाए। हमको भी थोड़ा
हम उतना ही खाना चाहिए जितना कि हमारी बॉडीली नीड सेटिस्फाई हो जाए। हमको इतने ग्रहण करना चाहिए जैसे कि हमको ज्यादा नहीं खाना चाहिए वैसे। Hare Krishna. तो Okay, so what do थैंक we यू प्रभु have? जी। Hare Krishna. ब्लेसिंग भी दीजिए प्रभु जी अपना। Excuse me? Prabhuji, she wants blessings from you. Well, blessings are always in the instructions. You told that you've heard many classes on Yukta-vairagya. If one have heard something and he or she follows, then he or she is already blessed. It is the question of following. It is not the question of some magic that please tell some magic words and my life will be transformed. It is not like this. तो प्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि ये ब्लेसिंग्स अब इनके निर्देशों में ही होती हैं प्रभु जी के, कि जो प्रभु जी निर्देश दे रहे हैं उन्हीं को हम अच्छे से फॉलो करें। ऐसा कोई शब्द नहीं है कि प्रभु जी बोल देंगे और हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो प्रभु जी जो निर्देश दे रहे हैं हम ही उसको अगर फॉलो करेंगे तो वही एक तरह से प्रभु जी की हमारे लिए ब्लेसिंग। The nature of blessings is that we get instructions and we follow instructions. If we follow, then it works. Otherwise, what we can expect? What changes in our life we can expect? So Translate, प्रभु जी, translate. there are few questions in the Yeah, chat box. I'm going to read it. Okay. Someone whose name is S. He wrote, how to listen attentively. My mind is very restless during hearing. Well, again, it is quite broad topic. If Gaurang, by the way, what is the verse for tomorrow's evening? Maybe we can discuss this particular topic, how to listen attentively, because it is very broad topic. What will be the verse from which chapter? Don't you remember? Prabhuji, in the morning or evening? Evening, tomorrow evening. Prabhuji, tomorrow evening it will be from Bhakti Yoga, 12.3, 12.3. 12.4 maybe. 12.3. It is exact shloka, right? Ji, Prabhuji. G. G. Hanji. Okay. Okay, let's check what is it. So, well, of course we can give short answer on this, but well, 12.3. Those who are for that last. Okay, we can discuss it tomorrow evening. But well, what can be told? First of all, don't spoil your japa by having how to say, by doing in evening time some activities that will spoil your japa for sure. First of all, don't do it. Okay, तो प्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी साधना पे ध्यान देना चाहिए, कि हमें साधना को हम स्किप ना करें, साधना को कोई साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो साधना जब हमारी ठीक जाएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी हियरिंग भी अच्छी हो। For example, don't overeat, because it will influence on your state of mind in morning hours next day. तो प्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, तो खाने से ज्यादा हमें नींद आती है और हम उतना अटेंटिवली हियरिंग नहीं कर पाते। Also, it is really not recommended to to use internet or to watch TV in evening hours, because we get this samskaras, these impressions, and then when we will be trying to chant holy names in morning, what we will be watching on our internal screen, we will be watching the same movies. तो जैसा कि तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमको बाकी के टाइम पे जो करना चाहिए वो हमको वही दिखता है जो हम जब कर रहे होते हैं, तो हमको अपने अंदर ही वो सब दिखता है कि हमने क्या किया है बात में, तो हमको उसको भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी चाहिए ताकि हमारी इम्प्रूवमेंट। Also, it is important not to argue with relatives or other people just before when you prepare to go to sleep, because it will influence on your sleep and it will make one's mind restless when you will try to chant holy names in the morning next day. ओके, तो हमको अपनी स्लीप का भी काफी ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करें। तो ये सब प्रभु जी ने बताया कि हमें अपने बाकी के जो दिनचर्या है उसको भी थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए ताकि हमारी इन रिटर्न हमको हियरिंग में हेल्प।
So this evening hour is basically according to Ayurvedic books, according to this Dinacharya system. It is supposed to be peaceful and non-anxious period of time. This evening, it is not for, it is not proper time to be in anxiety actually. जी, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो हियरिंग का टाइम होता है हमको एंजाइटी में नहीं रहना चाहिए। हम अगर अपना जीवन होगा, दिनचर्या होगा, वो काफी पीसफुल बनाएंगे तो हमारी हियरिंग में भी हम उतनी अटेंशन दे पाएंगे। It is not time for loud talks. It is not time for passion. It was daytime for passion. तो ये एक डे टाइम माना जाता है पैशन के लिए। ये जो हमारे मॉर्निंग का टाइम है ये उसको पैशन के लिए नहीं माना जाता। And in brahmacharya ashramas, not maybe in every brahmacharya ashram, but in some good brahmacharya ashramas, they have so-called silent mode. It means that since, for example, 7:30 p.m. or 8 p.m. or 7 p.m., they have a rule that now we're not going to produce too much noise. तो ब्रह्मचारी आश्रम में भी ऐसा कुछ एक विधान है हम कुछ जगह पे कि आफ्टर 7 मतलब शाम के 7 या 8 बजे के बाद वो ज्यादा नॉइस मतलब अपने मुंह से भी और बाकी चीजों से भी ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते। And the other details we will discuss tomorrow evening. So बाकी डिटेल्स कल शाम में जो भगवदगीता क्लास होगी उसमें शेयर हो जाएंगे। And प्रभु जी, the topic for Bhagavad-gita in tomorrow's evening may be around 12.8 or 12.9 because we haven't covered today's verses. So I don't know how many verses we will be going to cover today. Okay. Then you just write me. Okay, anyway, these verses are also good for speaking about attentive chanting. These verses. You write me on WhatsApp. Please write me on WhatsApp what verses we're going to read tomorrow. Okay, while chanting, my mind is very flickering. It goes here and there. What to do at that time and be focused on hearing and speaking. And yeah, okay, it is the same question. Okay, tomorrow evening. So what do we have more? That's all. Yeah, that's all. No more questions in the chat. Hare Krishna, and likely our time is also over, right? Okay, then thank you very much for your kind attention. Tomorrow evening we will be discussing this process of devotional service and how to be attentive in chanting. Thank you very much, Prabhuji, for your kind association to us. So, हम प्रभुजी का we will thank Prabhuji for this precious time Prabhuji has given to us by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much, Prabhuji. Okay, Hare Krishna.